so that we can post it on YouTube. Okay. One of the most important thing in the market, right? Are you guys able to see my screen? Yes. Yeah. Okay. Perfect. Yes, Nalay, you can go ahead. Yeah. I'll cover two topics only today, right? One is the Chola fin, right? It again hit the setup. I think Nibu, you got it perfectly in terms of there is a pre-open setup there as well. But in terms of catching the price action, right? I think you got it best. You shared it in DM with me, right? And that was the perfect way to enter the trade, right? But let me come down here, right? Let me go to Go chart so that you guys can actually see this live in terms of how to do it, right? It was a live trade, so I don't need to, I'm not bluffing anyone. It's a live trade that we had given, right? But important thing is not to look at it later, help you understand that in live market, how can you take a trade, right? So we'll relive the moments, right? In the option chart as well as this chart. Sir, sorry for disturbing. Hmm. I just wanted to say something. Hello. Yes. Yeah. In future, na, your popularity will grow very high. So I'm afraid some competitors, na, they will try to your that Telegram channel, because I see so many YouTube videos that some SEBI. So you please always give disclaimer when you will give some trade. So there always you say that this is for educational purpose only. Sorry. Now you can. Yeah, no. It's a Thank you. point. Yeah, because I don't want it to stop. Agree. Thank you. So Thank you. are you guys able to see both the screen? I've shared the Go charting screen as well, right? Are you guys able to see it? Yeah. Is the Go charting screen up? Yes. Okay. Yes. Let me go to a 1 minute chart and then replay this. Right? அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாதுங்க, பெருசா ஸ்பேஸ் ஆகாதுங்க. தச்சு தேவைப்பட்டா Okay. We will come here. Okay. Now, market had opened somewhere here, right? It had opened here. It's opened here. This is the candle where it has opened. Okay, I'll just pause this. Now, whenever something like this has happened, right? You have a big gap down. Right? Don't panic. Don't try to enter a put in hurry. Right? The reason is, if you see the prior price action, and I'm switching to a Banknifty chart on 15 minutes, right? Here. What is the prior price action? It's continuously trading upside. It's continuously trading upside in a channel. Right? This is the channel. Now, in the channel, there are certain important points. Yes, it broke down the channel, but there are certain important points. Now, for Banknifty, right? Even in my yesterday's video, what did I say? It's actually at a trend line. If it sweeps down with a minor gap down, right? I will not be encouraging anyone to take a short trade. Right? Now, if you see, this was the breakout level. This was the breakout level. Right? Why is this level important? This particular candle is a rally-based rally formation, and this is where, right, market has, there are 2 or 3 confirmations that the market is having. One, it's a psychological support of 43,000, so market will not easily break, right? Second, it could potentially have a sweep formation. There is a support which has been tested the 3rd time, right? So 2 times when it tests, you draw a trend line. 3rd time you actually confirm the support, right? So this was 2 times you draw a trend line. The 3rd time you confirm the support. This was a break resistance earlier, became a support now. This becomes a flip zone. So there are 3-4 confirmations, right, that you have in the market at this particular stage, right? That is my first point that you have to observe, right? So when market opens, which is where I said that yesterday at pre-open, today in my morning message also, I said, if it opens small gap down, if it opens big gap down, we will watch the pre-open levels, right? Pre-open levels clearly told you where it is going to open,
right? Once it's opened, let the call premiums get decayed 5-10 minutes, right? You should not enter a trade in a hurry because first 5-7 minutes, so there will be a lot of panic in the market, which people will try to absorb. Right? Now I'm switching to go charting chart. There is a gap theory. I had taken one gap trade, right, live, and I think Nanda had caught that thing, right, and he had asked some questions on how do you trade a gap related thing. And now here, what is the gap? This is my gap. This is my gap. Okay. Now, are you able to see it, guys? Now, in the gap, everything which is around. So you don't buy everything in premium and you don't buy anything in deep discount because what is cheap may not necessarily be a good thing for you, right? So you don't buy anything in premium, you don't buy anything in deep discount. Right? You have to wait for an appropriate level to buy. So if you see, right, the price actually took a support, formed a big bullish. The reason why I've chosen this is the gap closing, there is the gap opening, right? Now we have couple of confirmations. A, market is in a trend, market is in an uptrend, right? Market is having supports, logical supports where it is taking. Third thing is there is a candlestick sweep which it is doing, right? Now, simply put, I am waiting, right? I am waiting for this thing to give me a good trade, right? I will proceed forward, right? It attempted to go up, again came down, right? Till here, I had not given any trade. I think I have given a trade here around 927. I typed because it was sustaining above this level, right? This level of 43,367, which was a 50% of the Fibonacci gap or Fibonacci level on the gap, right? If you see here, it is in 1 minute chart. Do you clearly see this sustaining? You see a hammer here, shooting star trap candle, consolidation. Do you see this consolidation range, guys? This just above the high wick of this candle, right? Is it consolidating for how many minutes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes, right? It is sustaining. And the consolidation is happening on the higher end of the range. Is it happening on the lower end of the range, higher end of it? Even if it happens on the lower end of the range, I am expecting a sweep and then a comeback, right? So in this case, again, I won't be 100% right, guys. I am only right 60 to 70% of the times. But when I am right, I tend to take 1:2, 1:3, 1:4 as my risk level, right? Don't assume that whatever I am teaching you will work 100% of the times. There are times it will not work, and that is where your risk management comes into place, right? It's consolidating on the higher end of the range. What happens next, right? Now, here, let's go to the option chart as well. Right here, let's go to the option chart as well. Now, where did we buy option? I don't know why, since yesterday zero the is automatically freezing. Now, where is option being bought? If you see, option was here, right? Same. It's trading between 350 here, right? I'll go to 1 minute chart only. 1 minute chart. You see this level here, the second candle. This is 338. This one. 339.15. I had given a buy just about, right? 340. I had given a buy just about 340. Once it came, it went to 358. Again came retested. Now, ideally, what was my stop loss? My stop loss was 316 or 314. Right? It was just below this, just near this swing. Right? When should I be worried? I should only be worried if it starts closing below this level, right? Because this is where market is logically, option price is logically having a support. Right? Once it started consolidating here, if you see, none of these swing lows are being met. Right now, if you take a small trend line here, do you see this support being created? The moment it broke out of 358, it was going to go back and retest these highs. This is the morning day high. It retested, and from there it can fall or it can do whatever it wants. Right now, given I don't take contra trade, ideally
I was away from the system. I had made my money for the day. If I wanted to take a trade, I would have shorted this call here at 440 with a small stop loss of 470. Right? 30 point stop loss. I would have shorted the call. But again, that opportunity was not there. Right? So I was away. And option selling generally you should not do when you are away from the system. You don't have access to the tools. Right? Is this trade understood? Any question here? Right? This logic of picking the option strike, option price where I wanted to enter, because at this point of time, VWAP is not there, so you don't have benefit of VWAP. Right? With Go charting, if you see now, it breaks out, it will break out, and typically it has to go and touch 43,510 to 43,600 570. Right? These levels are gonna naturally give me a resistance. Okay. Gap theory typically says that 78 to 80% of the gap gets mitigated, then there is a fall which can come. But given the fall side, right, I'm going against the trend. A, I will not go with full quantity. B, I will not look at trading big amounts, or I would try to short C rather than buy B. Again, this is where I told everyone to exit, right? 1:4 had come. I told everyone to exit. Who's in there? Okay. This is where I said I am exiting the trade. Is this trade understood? Ask me any question that you guys have. Yeah, Nilesh sir, one question. Hmm. The Fibonacci chart which you have plotted here, right? The bottom point of the Fibonacci should not be at the bottom of the first candlestick, or it should be at that opening price. I just wanted to So know. gap. So when a gap is getting formed, right? At pre-open, you don't know where till where the first candle will go. That is when you are looking at plotting it at the bottom, because at pre-open, these are the levels that you have. Okay, one more question. The stop loss which you have just mentioned regarding that first trade, why 314? Because just below that there was a swing. So actually, when I try to book my stop losses, I am actually having some sort of difficulty there. So if it goes below 314, right, it will come right down to 247. Then there is no stop loss that can protect you. So the idea is you have to Why that minimize particular your, level? Why that particular level only? उसके नीचे कुछ सपोर्ट है ही नहीं रहा। एंड मेरे स्टॉक में जनरली 26 पॉइंट से ज्यादा होते भी नहीं है, क्योंकि मैं अगर माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, राइट, आई जनरली रिस्क 10 to 12% ऑफ माय कैपिटल, राइट। मैंने जो ऑप्शन प्राइस चूज किया है उसमें 26 रुपए का अगर स्टॉप लॉस में दूं तो इट्स 8% ऑफ 12%, व्हिच इज 1% ऑफ माय कैपिटल। मैं उससे ज्यादा स्टॉप लॉस दूंगा ही नहीं करूंगा। अगर उससे ज्यादा स्टॉप लॉस मेरे को देना होगा तो मेरे को मेरा क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। So I try to choose at a band where it's not more than 8%, and अगर 10% से ज्यादा मेरे को स्टॉप लॉस देना होगा तो मैं मेरा कैपिटल कम कर दूंगा। Sure, thank you sir. सर आपका एसएल जो है वो सिस्टम में ही रहता है, मतलब जैसे आपने ट्रेड लिया वैसे एसएल सिस्टम में चले जाता है कि आप होल्ड करते क्लोज करने के लिए नहीं वेट करते हैं, मतलब सिस्टम नहीं है। ओके 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 सर। क्योंकि कभी कभी कैंडल्स इतनी बड़ी आएगी ना, रिकवर कर जाएगी हाँ। 1-2 बार, 8 बार रिकवर जब नहीं करेगी ना तो आपका कैपिटल इतना डेंट करेगी कि जैसे आपका अभी जो लो है 311 का है, तो आप जैसे ही वो हिट करेगा भले उसके क्लोज होने का वेट नहीं करेंगे ना, मतलब आप? नहीं मैं सिस्टम में डाल दूंगा। ठीक है। मेरे सारे ट्रेड्स में ना, मतलब जैसे लेता हूँ वैसे सबसे पहले एसएल डालता हूँ। मैं टारगेट का कभी नहीं सोचता, मैं हमेशा पहले रिस्क का सोचता हूँ। तो आप ट्रेल कैसे करते हैं आपने? हाँ सर ट्रेल कैसे करते हैं आपने ट्रेड्स को? ट्रेल कैसे ट्रेल करते आपको हैं आपने हमेशा ट्रेड्स को? स्विंग्स के ऊपर। तो जब तक एक लॉजिकल स्विंग नहीं ब्रेक होता ना, तो एक तो 1:1 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक ट्रेल करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने एनालिसिस किया है। अगर एनालिसिस गलत है तो आपको पेनल्टी लेना चाहिए 1% का। बट बेसिकली इट्स अ रिस्क ऑफ डूइंग ट्रेडिंग, राइट। तो मैंने इतना सोचा था कि मैं 1% देने को तैयार हूँ। तो जब तक 1% मेरा 1% के ऊपर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलता तब तक मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करना नहीं चाहिए। एक बार ऊपर गया उसके बाद आप स्विंग्स पे जोड़ते जाइए। यहाँ पे जैसे गया 372 पे, ठीक है, ये मेरा स्विंग है 356 का। इसके नीचे अगर आएगा तो फिर शायद 340 333 आ सकता है। फिर ऊपर गया
आप स्विंग पे करते जाइए उसको। 1:3 के बाद फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लीजिए। इनिशियल डेज में 1:2 पे आप ट्रेल करके निकल जा सकते हैं। आप जो सुबह को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे किया था ना, ये विक का हाई मिलाया था, वही चीज अब मार्केट पुट के साथ कर रहा है। जो विक बनाई थी उसे पुट को मिला रहा है। नीले सर, ये फिबोनाची पे जो आपने गैप थ्री का बताया, यू टुक द ओपन नॉट द लो, कैन यू say it again? देखो प्री ओपन में Why मुझे you पता took नहीं the कि open and अब ये जो ओपन है ना प्री ओपन का, ये मुझे पता है जैसे गैप बन रही है एट 9.7, मुझे सिर्फ ये लेवल पता है, कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर आएगा मुझे नहीं पता। तो मुझे जो ट्रेड Okay. लेना है गैप क्लोज एंड गैप ओपन से लेना है, कल okay, का क्लोजिंग एंड आज का प्री ओपन लेवल से। Thank you. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है 9:15 के बाद वो तो मुझे पता नहीं, मेरे को तो प्लान ट्रेड दारू 9.7 नहीं। 9.8 पे करना है। okay, got it, got it. ओके, अब ये सर, ट्रेड समझ में Yes sir. सर पूछो, पूछो। एक चीज और पूछनी थी आपसे, सिंस ये इसमें जो आपने कंसोलिडेशन 0.05 लेवल पे हुआ 50% लेवल पे, ये सेम अगर कंसोलिडेशन थोड़ा नीचे 0.38 लेवल पे होता तो क्या हम इसे कंसिडर करते? कंसिडर करते प्रोवाइडेड नीचे की ये जो स्विंग्स जो है ना उसको नहीं तोड़ता। ओके 33 and 50% is a good discount. 68-88% is premium. तो प्रीमियम पे मैं बाय नहीं करूंगा एंड डिस्काउंट पे मैं सेल नहीं करूंगा। उसके बाद एक अलग सेटअप ट्रिगर होता है, मेरा लॉस निकल जाता है तो ब्रेकडाउन रिटेस्ट ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा तब तक मैं नया स्विंग नहीं होगा। सॉलिड बॉडी से क्लोजिंग होना चाहिए तो फिर उधर दूसरा सेटअप। एंड वही सेम चीज मैंने कल एक्सपायरी में भी किया था। मैं ब्रेकआउट क्योंकि सभी कुछ प्रीमियम पे था मैं बाय नहीं कर रहा था, बट जैसे ब्रेकआउट सॉलिड बॉडी से हुआ उसके बाद मेरा एक और एक सेटअप ट्रिगर होता है जो है ब्रेकआउट रिटेस्ट ब्रेकआउट। वहां पे क्या है, वापस मेरे पास एसएल लगाने की जगह होती है। फेकआउट होना होगा ना तो सेम कैंडल में स्वीप करेंगे। ठीक है, तो जनरली मेरे ब्रेकआउट इसके लिए वेस्ट नहीं जाते क्योंकि ब्रेकआउट रिटेस्ट ब्रेकआउट जब भी होता है तो एन टाइप का एक पैटर्न बनता है। वो एन टाइप का पैटर्न बहुत कॉमनली ट्रेड हो रहा है। स्मार्ट मनी में उसको इस टाइप का पैटर्न बनता है। ओके सर। सर वो चोला वाला ट्रेड ठीक है, ये एक्चुअली एक बहुत लोग इसको दो तरीके से ट्रेड करते हैं। कुछ लोग इसको ब्रेकर ब्लॉक की तरह ट्रेड करते हैं, कुछ लोग इसे क्वाजीमोडो की तरह ट्रेड करते हैं और कुछ लोग इसे नॉर्मल प्राइस एक्शन थियरी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। कुछ लोग इसको इंड्यूसमेंट के लिए भी ट्रेड करते हैं। दोज थिंग्स यू विल लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट कीप इट सिंपल राइट नाउ। ब्रेकआउट रिटेस्ट ब्रेकआउट जब भी होता है आप इसको, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर यहाँ पे आप सॉलिड बॉडी से क्लोजिंग हो रही है, स्वीप नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस लगाने की जगह होगी। तो ये आप डेफिनेटली ये ब्रेकआउट रिटेस्ट ब्रेकआउट रिलीज, ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेड्स होते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, रिस्क कम होगा रिवॉर्ड अच्छा। सर आपने कोटक बैंक का भी दिया था ना, आपने बोला 6,000 क्रॉस का बैंक। सो वो डेटा के बारे में एक बार समझाएंगे, वो डेटा आपने कहाँ से लिया? वो MSCI रीबैलेंसिंग का डेटा आया हुआ है, कोटक का वेटेज बढ़ने वाला है। एंड ये मैंने एक्चुअली एक लाइव सेशन में भी समझाया था। कोटक में अगर आप देखेंगे ना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक दिन एक वाइल्ड कैंडल आई थी प्री ओपन में, 10% प्री ओपन में 3002 के ऊपर दिखाया था उसने। तो वो लेवल जो प्री ओपन का है वो मीट होने आएगा एक बार। तो MSCI रीबैलेंसिंग 15 या 17 मई को है। तब फंड्स HDFC बैंक से बाहर निकलेंगे और कोटक बैंक में आएंगे। सर चोला फाइनेंस का तो सुबह ट्रेड आपने दिया था, उसके पीछे का लॉजिक जानना सर। देखो एक तो प्री ओपन सेटअप है, वो प्रीतम का सेटअप है, प्रीतम कभी समझाएगा वो। बट प्राइस एक्शन के स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली ब्रेकआउट्स पे है। अब व्हाट इज गोइंग है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग गई थी। ठीक है, 5 मिनट्स पे अगर आप जाओगे, एक बड़ी कैंडल ओपन हुई, एक बड़ी कैंडल के साथ ये यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, इसने अपने स्विंग का सपोर्ट दिया, इसने अपने
स्विंग का सपोर्ट ये है यहाँ पे, लोज को ये लोज को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो हम इंडाइसिस में करते हैं वही इसमें करना है। सिमिलर सॉर्ट ऑफ बैंक निफ्टी ट्रेड था ये बेसिकली, जो आज बैंक निफ्टी में बना था। नहीं, आज बैंक निफ्टी का नहीं, मैंने कल जो समझाया ना वो वही वाला ट्रेड है। कल मैंने ये बहुत बार समझाया था कि जब भी मार्केट एक हाई बनाता है, एक बड़ी कैंडल बनाता है, उसके बाद उसके अंदर ही ट्रेड करता है। आप प्रायर 2-3 ट्रेंड लाइंस के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो एक नेचुरल रेजिस्टेंस बन रहा है ना, लो निकाल रहा है ना हाई निकाल रहा है। बुलिश कैंडल बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा अराउंड ब्रेकआउट और उसके बाद बूम जाएगा। तो ये ब्रेकआउट रीटेस्ट यहाँ से जिसने भी कैच किया होगा इसको बहुत बढ़िया मूवमेंट। यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही होगी ओपनिंग में, बट ओपनिंग के बाद यहाँ से बहुत ही सॉलिड मूवमेंट मिला होगा जिसने भी ऑप्शन में खरीदा। सुपर्ब, सुपर्ब, थैंक यू सर। And ये नीचे से भी सपोर्ट मिलेगा। तो नीचे से भी परपेंडिकुलर लाइन मिला, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। तो जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा तब तक नीचे आएगा, एंड सपोर्ट ब्रेक करेगा तो आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, क्योंकि अगर सपोर्ट ब्रेक करता है ना तो उसमें सीधा नेक्स्ट स्टॉप इधर करता है 950 टू 940। सर एक चीज और है, ये इस तरीके के जो सेटअप्स बनते हैं ना, ये यूजुअली अप ट्रेंड में काम करते हैं या फिर डाउन ट्रेंड में भी कभी कभार जब ये बन जाता है तो काम करता है? दोनों से है, दोनों साइड। बट डाउन ट्रेंड में मैं सिर्फ बेरिश ट्रेड देख रहा हूँ, बुलिश नहीं। ओके, ये सारे ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है। तो मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन, कंसोलिडेशन एंड ट्रेंड रिवर्सल, 3 सेटअप्स बनते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ट्रेड करने का एक मेथड होता है, ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड करने का एक मेथड होता है, ट्रेंड कंसोलिडेशन को ट्रेड करने का एक मेथड होता है। तीनों को ट्रेड करने के मेथड्स अलग होते हैं। कंटिन्यूएशन, द प्रॉब्लम इज रिटेल ट्रेडर्स दे ऑलवेज सी रिवर्सल, दे ऑलवेज सी रिवर्सल, उनको रिवर्सल देखना नहीं। तो मेरा सजेशन क्या है, आप रिवर्सल ट्रेड्स नहीं लीजिए, आप ट्रेंड पे अच्छा खासा मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है, हम जो कि ऊपर है हम सोच रहे हैं कि उसका एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट, जो कि नीचे आए उसे हम एक सपोर्ट पे लगाते हैं। So that willingness to catch the bottom. Like you're not audible properly. Is it audible? Very, very far from your volume, very low, means like you are talking from very far. Is it audible now? Yes, yes. So, as a retail trader, now, what the big problem that I have seen or I have faced in the past, right, is the willingness to catch the top and the bottom. Right? You want to catch the top or you want to catch the bottom differently. And that is not required if you want to make maybe 5, 10, 20% every day in the market. So the thing is, there is a trend, right? Let the trend continue. You enter when your setup is getting formed in the direction of trend. Take a trade. Ensure that you are taking an optimal risk reward. You will make 5-6% when you trade with minimal capital. I follow that thing, right? Trend reversal 100 cash. The problem is in uptrend, right? Resistance is going low, in downtrend supposed to number. उसका reason क्या है? Uptrend में क्या होता है? It is not always acting. So there is a lot of people who are not. So every time market will come down, people will try to buy the securities rather than selling them. Because there are a lot of people who are selling the same line who have missed the value that you enjoyed earlier. So a level which is premium for you is not a premium for them, it's a discount point, which is where an uptrend, the market character is such that you have more and more people trying to buy securities. Again, voice became very, very low. Can you please repeat? Hello. Yeah, in uptrend, right? In uptrend, generally what happens, what is premium for you as a retail trader, right, may not be premium for people who would have missed the rally. So what happens, people who have missed the rally, right, they come in later and they keep propelling the securities up. Okay. So in uptrend, rather than selling at resistance, you try to buy it, right? In downtrend, the counter thing happens. So many people who do not exit their securities in premium, whenever the market goes up, they tend to exit their positions and run away.
positional traders also and intraday traders also. So every bounce gets sold. So when the trend is up, right? When the trend is up, don't try to sell. When the trend is down, don't try to buy, right? Wait for market to give you consolidation, some sort of change in character, formation of higher highs, higher lows before you enter a buy trade in a selling market. And reverse, right? You should do when you are trying to take a sell trade on a uptrending market. right? तभी मैंने कहा था, मैं उस दिन को 1-1.5 घंटे का सेशन यूट्यूब पे लिया था लाइव ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड, राइट? मैनी पीपल फाउंड कि यार ये छोड़ो, कॉल्स तो ऑन, कॉल्स तो मैं आपको दे दूंगा, हर दिन दे रहा हूँ, लेकिन आप जब तक ट्रेंड नहीं पहचानोगे ना, आप उस कॉल पे बैठ ही नहीं पाओगे। आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आपको कब फुल क्वांटिटी लेना है, कब हाफ क्वांटिटी लेना है, कब पार्शियल क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अब नाउ जस्ट सी दिस, राइट? Anyone who would have entered the put, your logical entry of put, now that you have 1.5 hours of trading which is done, you would need a VWAP here, right? एक VWAP के ऊपर ही आप लोगे, इस VWAP के ऊपर ही आप लोगे, उसके नीचे तो ले नहीं पाओगे। इसका स्टॉप लॉस कितना है? 229 से 270। यहाँ पे 296 पे आपकी क्वांटिटीज ऐड होगी, आपके टारगेट 350 और 440 होंगे, ठीक है? बट आप फुल क्वांटिटी नहीं ले पाओगे कभी भी इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नीचे मार्केट कहीं पे भी सपोर्ट नहीं। अब यहाँ पे जो भी मार्केट कर रहा है, मुझे इंटरेस्ट है यहाँ पे मैं अपना बाइंग सोच रहा हूँ कुछ। अगर मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैंने यहाँ पे पुट जरूर शॉर्ट किया होगा। जो भी आज अग्रेसिव ट्रेडर्स है उन्होंने 460 पे पुट शॉर्ट किए होंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 494 एंड दे विल हिट टारगेट्स ऑफ 270 बाय एंड ऑफ डे। दे विल एम, दे वोंट हिट या नहीं हिट करते पता नहीं। But the idea is this is how you plan your day, right? You look at the trend. Now trend changes. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो ट्रेंड चेंज होने के लिए ना आपको 2-3 दिन में सस्टेन सेलिंग चाहिए। आज की तारीख में क्या हो रहा है? एक दिन सेलिंग आती है, नेक्स्ट दिन वापस इंट्राडे में फिर बाइंग आ जाती है और फिर नए बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा 4-5 दिन गैप अप हो, सेलिंग आए, सेलर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए करेंगे मार्केट को सेलिंग आए। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपको हर डिप पे बाइंग नहीं है। Is the point understood? Is it Yes. Yes, yes. So you have talked about the change of character, right? So how do we able to identify that the market has changed its character? swing, major swing, swing low and swing high, breach करना चाहिए। Sir, can you explain yesterday's gold chart, that breaker block concept? Because I think yesterday something like that happened. Suddenly it went up and then it came down, took support where before it was like resistance, it became like support. So that I want to know how to take trade. Yeah, I had given that trade to couple of the group members. अभी भी chat बनाई नहीं है। Yes. I'll go to I was 15 watching minutes. Telegram. Mhm. Okay. So इसमें ना एक्चुअली सेशन का खेल होगा। मैंने कल कहा भी था कि फॉरेक्स में जनरली 3 सेशन होते हैं ट्रेडिंग के, एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क, ठीक है? इन सेशंस में भी किल जोन मतलब जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम मूवमेंट नहीं होगा। जैसे बैंक निफ्टी भी आप ट्रेड करते हो ना, तो आपका मॉर्निंग है, इन बिटवीन एक आपका सेशन है जहाँ पे कंसोलिडेशन का ही सेटअप हो सकता है, जिसमें आपको रिवर्सल ट्रेड्स भी मिल सकते हैं। और तीसरा होता है यूरोप या फिर डे क्लोजिंग, जो 2-2.5 बजे का सेटअप। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, इनके सेटअप्स होते हैं मॉर्निंग वोलेटिलिटी, इवनिंग मतलब डे क्लोजर ट्रेडिंग के, एंड इन बिटवीन डे ट्रेड मतलब 10:30 से 11:30, 10:30 से 12:30 1 बजे तक ट्रेड करना है। वैसे ही फॉरेक्स में ये 3 सेशन हो, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क में इवेंट्स होते हैं। एशिया में एशिया बेस्ड इवेंट होते हैं, बट ग्लोबल मार्केट में एशिया से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेटल्स को चाइना से पड़ता है। और आता है आपका लंदन का सेशन, राइट? लंदन का सेशन ये यूरोपियन बेस्ड करेंसीज में बहुत इम्पैक्ट करता है। ईसीबी का कुछ होगा तो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट है। तो होता क्या है, सेशंस है ना, दिन के कोई भी 2 सेशन एक डायरेक्शन में रहते हैं, थर्ड सेशन अलग डायरेक्शन में आए। लंदन एंड न्यूयॉर्क सेम डायरेक्शन में होगा तो बेस्ट होता है, बिकॉज दोनों हेवी इम्पैक्टिंग सेशन है। एशिया सेशन जनरली माइल्डेस्ट है बिकॉज ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे कम।
कल अगर आप देखेंगे एशिया सेशन ना वाज डाउन, लंदन सेशन वाज डाउन। अगर आप देखेंगे लंदन सेशन यहाँ से शुरू हुआ 12:30 से, इट वाज डाउन ओनली। ठीक है ना, तो लॉजिकली एशिया एंड लंदन हैड अलाइंड, राइट? आई वाज एक्सपेक्टिंग न्यूयॉर्क सेशन टू इधर कंसोलिडेट, और दो ही तीन ही पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, इधर इट कैन कंसोलिडेट गो अप। ठीक है, दो सेशन कम डाउन हो चुके थे, तो थर्ड सेशन को ऊपर ला रहे, या तो कंसोलिडेट करना था। तो अब वहां पे ट्रेड कहाँ बनता है? ट्रेड आपका यहाँ बनता है 2032 पे। अब ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, तो मेरे टारगेट्स क्या है? ये विक को मिलना है इसको एक बार। तो जब नीचे आ रहा है, तो अब मैं प्रीमियम में कभी बाय नहीं करता। तो ये जो कैंडल्स बन रही है बड़ी बड़ी, ठीक है, अगर आप ये न्यूयॉर्क सेशन का एक्चुअली पूरा फिबोनाची लगा लो, ये न्यूयॉर्क सेशन का पूरा फिबोनाची लगा लो, ये सपोर्ट 2045 का एक नेक्स्ट है, यहाँ पे एक डब्ल्यू वाला, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, इसका ब्रेकर ब्लॉक नेक्स्ट बनेगा। या ब्रेकर ब्लॉक नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक जनरली क्या होता है? एक अपस्विंग, एक नीचे, फिर एक डाउन स्विंग। मतलब काउंटर ब्रेकर ब्लॉक इज अ रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इट इज नॉट अ इन ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये डब्ल्यू जो बना था ना यहाँ पे, डब्ल्यू, इसका सपोर्ट लेके इसको ऊपर जाना था, यहाँ पे स्वीप किया। स्वीप करने के बाद देन इफ यू गो इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, you would get the zone to enter the trade। ये जोन है एंट्री का। तो जब जब नीचे आया, Yes, मैंने yes. ये कंफर्मेशन ट्रेड्स होते हैं। फर्स्ट डिप पे आप एंटर नहीं करते, सेकेंड टाइम जब हायर लो बनाता है, तो यहाँ पे एंट्री होती है, और ये ट्रैप कैंडल के ऊपर एंट्री होती है। 2047 के ऊपर एंट्री थी विद 2045 स्टॉप लॉस। So first time I touch, if it forms a sweep, you can take it. Second time it's a decisional. You have to wait for retest, higher low, and a trap candle, something to actually give you confidence to enter that. Nilay, Hmm. if you can just help me with the session timings once. Earlier you had given, but I was not able to note it down. So London, New York, Europe, and Asia sessions के timing क्या होते हैं in Indian Standard Time? आप इधर डालोगे ना, वो मिल जाएगा। इंडिकेटर ही है, एशिया रीजन फुल जोन्स, सारे सारे टाइम जोन में एक इंडिकेटर ही, आप उसी से जाओ डाल दो, तो आपको कोई ये सब करने का जरूरत नहीं है। Understood. मैं भेज दूंगा आपको। सर टेलीग्राम पे भेज दीजिए। हाँ, मैं आएगा पोस्ट कर। इस नेम इज टाइम जोन ना, इंडिकेटर नेम। ये नहीं, एक और एक इंडिकेटर जो अलग अलग कलर्स में दे देते हैं, 3 कलर में देते हैं। एशिया एक पिंक है, एक येलो है, और एक ग्रीन। मैं भेज दूंगा। Amazon पर the gold. एनी क्वेश्चन? गिरचा कोटाके. Nilay, Amit here. Nilay, can we go for his Co-Forge? इसका चार्ट देख सकते हैं Co-Forge? मैंने कल एनालिसिस में टेकअप किया था उसको, मैं आपको वापस समझा दूँ। कल मेरा मिस हुआ। Also, Nilay, if possible later on when you get time, if we can see the NG chart, natural gas. Natural gas for me is a short right now. Yeah, correct. So if we can just read that chart together, so I understand, okay, how do you form that view? Because for shorting, I am not able to right now at this kind of levels. I'm too much. नहीं, अभी तो नो ट्रेड जोन में, अभी नो ट्रेड जोन में। इनफैक्ट मैंने उसमें एनजी में तो मैं डिप जब तक नहीं होता तब तक बाय नहीं करूँगा। ये इसका पूरा स्विंग है अभी, ठीक है, ये इसका पूरा स्विंग है, ठीक है। नाउ राइट नाउ द सेलिंग इन आईटी और नैस्डैक इज कमिंग बिकॉज ऑफ द पैनिक ऑन द बैंकिंग सेक्टर, राइट? So macroeconomically, the moment this actually, so okay, this is trading above the premium, as in it's trading above 50%, right? ये अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, this trading here, now it ideally has to come between this zone, right? It has to consolidate and go towards the higher end of the spectrum, which is 4,219 and 4,324. ये जो दो levels हैं, ये इसको meet करने हैं। The reason why I strongly feel that this rally will happen is TCS. If you see it, TCS Infosys is actually taking turn, right? Day before yesterday I covered Infosys.
TCS I had already given in the initial few videos, right? If you remember, I had given TCS and TCS has already started going, right? Now, the way markets move is the business of the bellwethers move. Then second stage, now, the mid caps start making a move, right? So mid caps का time आएगा अभी, जैसे bellwethers का time खत्म होता है, mid cap का time आएगा. Now, there are two things which are coinciding. One is the quelling of the rumors on the banking side from the US officials, because they cannot allow all the banks to go down, right? So some news comes there someday. You would see the rally in mid caps. From a level standpoint, this is not right for shorting because it's actually taking a support at these places. So ये जो पूरा zone है ये support है. That is where I said this one. In fact, I have also covered yesterday. The moment it starts closing above these zones, 4,123, it can be taken for a swing trade for 4,300. Right? It answers your query. I don't look at CPR and all. CPR is statistics. I don't use indicators for a simple reason. Indicators are lagging. CPR is statistics at different one. Previous day high, low, close, right? But market doesn't work for that CPR. Got it. I will go to natural gas. Probably 163 or 160 is a good support, I believe, considering it's a low range. So that's why I was interested in this chart. नहीं, but अभी तो time है यार इसमें. मतलब I don't want to see this range, right? See, I've been always, I have been part of some groups where people were trying to buy it around 3. काफी सारे buyers there. I don't believe this is the right range to buy. मेरे हिसाब से this has to come and retest these zones. I'm saying since last 3-4 months, right? I've had some people who were 4-5 months back, part of the group where everyone was saying around 300-350 to get it. It's a good buy, right? I don't know if they have bought and they are holding it, but actually it is not a good way to buy. अभी market अभी तक इसके price ने कुछ भी नहीं दिया आपको, कहाँ से इसको buy करूँगा? Support confirm भी तो करना पड़ेगा ना, इसे कोई support confirm नहीं है. ये इसे कोई support confirm ही नहीं है. I don't know. I mean, I am not seeing. Yeah, I'm also. Understood. मतलब इस चार्ट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है बाइंग में. तो ये अभी लास्ट लेग ऑफ अपना सेलिंग पूरा कर ले. आई थिंक वी मे सी समथिंग, बट आई एम नॉट लुकिंग एट बाइंग. Understood. But then any logic behind such a big fall in NG right from 700, 800 levels to straight 160, 150 levels in a matter, and the major fall was in a very short span of time, maybe in a week or a couple of weeks time. So I used to trade NG at 130. There was no logic for it to go to 700. ठीक है. So 130 से 700 जाने का कोई मतलब नहीं था. जब 750 पे भी ट्रेड करा था तो मैं यही कहता था लोगों से, मैं 2000 रुपए में एनजी ट्रेड करता हूँ 0.10. 2019-20 में काफी स्टॉक फिनिक्स कमोडिटी के ट्रेडर होंगे, दे विल अग्री. तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं था 700 750 जाने का. एंड 750